Jean-Pierre et ses comédiens traversent ainsi le Rajasthan. Il apporte ainsi le théâtre populaire, celui de Jean d'Asté, et l'interactivité d'Augusto Boal lui permet de toucher les gens et de débattre avec eux. Quand on rit, on peut parler de tout, pense Jean-Pierre. Ce soir, la troupe s'arrêtera dans un petit village musulman pour tenter de parler des méfaits de la dot. Ce village est très pauvre et la tradition reste pour eux une très grande richesse. Jean-Pierre, par son théâtre, provoque forcément les réactions. Mais où se trouvent les limites ? Lakshmi et Ramuda s'aiment tendrement et s'avouent leur amour en secret. Mais leurs parents les surprennent et les séparent violemment. Dans une famille indienne, les mariages ont lieu selon l'ordre des naissances. D'abord le fils aîné, puis le cadet. D'où le conflit de cette histoire. Mais les pères semblent avoir trouvé un terrain d'entente. La belle Lakshmi sera mariée au frère aîné de Ramuda. Gopal et Madhu sont ravis à l'idée de marier leur fils aîné. Ce dernier s'en réjouit d'avance. Ramuda, quant à lui, est effondré. Il a perdu sa chère et tendre Lakshmi et il devra également organiser le mariage de son frère aîné et y assister. Le mariage unit Lakshmi et Bola. Un an a passé et Lakshmi vit désormais dans la maison de sa belle famille. Ses parents trop pauvres n'ont pas encore payé sa dot, ce qui provoque des tensions. Les humiliations et les maltraitances envers Lakshmi sont quotidiennes. Gopal se plaint du repas et n'hésite pas à la violenter. Un soir, la famille s'endort en rêvant ce qu'ils pourront s'offrir une fois la dot acquise. Une belle moto pour Bola, de beaux bijoux pour Madhu et de beaux vêtements pour Gopal le père. Au réveil, ils se rendent compte qu'il n'y a rien, comme la veille au soir. L'argent, la moto, les bijoux et les beaux vêtements, tout a disparu. Le rêve tourne au cauchemar. Alors, pour se faire justice, ils vont commettre l'irréparable. Le réchaud a explosé et le sari de Lakshmi a pris feu. Quand la famille de Lakshmi arrive sur les lieux du drame, Gopal, Madhu et Bola leur font croire qu'il s'agit d'un accident domestique ordinaire. Une jeune femme se lève et décide de rentrer sur scène. On distingue à peine son visage. Son acte est héroïque, car elle va jouer et surtout remplacer la jeune mariée suicidée devant tout son village. C'est certainement la première fois qu'elle prend la parole en public, et à voir les réactions des autres spectatrices, on mesure bien le niveau de la performance. Plus tard, en coulisses, elle nous avouera que cela est arrivé à sa propre sœur, et que cela ne doit plus jamais se reproduire. जबान कर ले चला के कपड़ा दो आपके नहीं क्या हाथ ये सुनिए सुनिए पानी पाए मत पानी ले मारे पानी ले लो कपड़ा अरे आ लियो जवाब दे बच्चे तो मैं बात की नौकरी क्या अरे तो शादी के लिए घर में काहे ले भाई छे तू
मर्जी से नहीं की है शादी। तो हमारा ध्यान से कहीं ध्यान तो पूछते पहले आप। आज ये बताओ पूछ पाछी की दी थी। देखो पहले देखो तो मोटरसाइकिल मिलेगी ख्वाब आ रहे थे ना। अरे टटुडिया हाँ बाबू। अरे आदम सुना बानी साथ मेरा खाई बाबू आप पीपी देख लो ना। या देख ना बाहर दूंगा। सामने से हट जा। अब बाहर दूंगा तो पुलिस भी जाऊंगी। जाओ 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 जा पुलिस में जा पुलिस में। ये पुलिस के पास जाना चाहती है, इनके लिए पुलिस कौन बनेगा? पुलिस, इनके लिए पुलिस कौन बनेगा? हाँ आइए भाई साहब आइए। Un jeune homme jaillit à son tour du public. Le public est en délire. D'un pas ferme et décidé, le jeune homme souhaite rétablir l'ordre. Il jouera l'agent de police. बोले क्या चाहिए आपको? हाँ आइए आइए। मैं यहीं गांव की रहने वाली हूँ। मैं यहीं पास की गांव के रहने वाली हूँ। हाँ बोलिए समस्या क्या आपकी? मेरी समस्या है, मेरे माँ बाप है ना गरीब थे। अच्छा गरीब थे और लड़का पढ़ा लिखा था। फिर क्या हुआ? मैं किसी दूसरे से प्यार करती थी। हाँ और गरीबी के कारण मेरे माँ बाप किसी दूसरे लड़के के साथ शादी कर दी मेरी। फिर क्या हुआ? वो दहेज के लालच में आके मेरे से ब्याह कर लिया। फिर? और करीब 1 साल हो गई मेरी शादी को। मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। कौन? सास ससुर जी और वो तीनों ही। कभी सास बोलती है झाड़ू लगा, कभी कपड़े धो। मैं उसके परेशान हाथ हो नहीं गई। क्या आपके सास के? क्या हाथ नहीं क्या उसके? ऐसे खैनी आइए मेरे साथ चलिए। Par sa gentillesse et ses sourires, la belle famille détourne le problème. Vishnu entraîne l'agent de police un peu plus à l'écart. Il achète son silence en lui glissant un petit billet. Dans ces cas d'extrême pauvreté, le mariage est devenu l'unique source d'enrichissement. La seule valeur d'une femme, ce sont ses biens. Quand ceux-ci sont épuisés, inutiles, alors on la brûle. Les chiffres sont accablants. Les statistiques nationales reposent en grande partie sur des rapports de police et beaucoup d'homicides sont déguisés en accidents. Il n'existe pas de chiffre officiel à ce jour, mais certains...